Wildlife map. This is not the wildlife map. You have to open page number 49. This is the natural vegetation map. Page number 45 is the wildlife map. You will see this later. Okay, so let us start the wildlife of India. On page number 48. Today we shall start from the medicinal plants. Page number 48, medicinal plants. It is written in the box, medicinal plants. Yes. Any one of you, Sharanya, or any other student, you start reading about the medicinal plants. Sarpagandha, Jamun, Arjun, Babul, Neem, Tulsi, and Kachnar. Read the importance of these plants. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. India is known. Anyone a student? Start reading. Medicinal plants. Yes. May I? Only one. Medicinal plants. India is known for its herbs and spices from ancient times. Some 2000 plants have been described in Ayurveda and at least 500 are in regular use. The World Conservation Union's Red List has named 352 medicinal plants, of which 52 are critically threatened and 49 endangered. The commonly used plants in India are Sarpagandha, used to treat blood pressure. It is found only in India. Jamun, the juice from dry fruit is used to prepare vinegar, which is carminative and diuretic and digestive and has digestive properties. The powder of the seed is used for controlling diabetes. Arjun, the fresh juice of leaves is a cure for earache. It is also used to regulate blood pressure. Babul, leaves are used as a cure for eye sores. Its gum is used as a tonic. Neem has high antibiotic and antibacterial properties. Tulsi, it is used to cure cough and cold. Kachnar is used to cure asthma and ulcers. The buds and roots are good for digestive problems. Okay. Identify. Now, wait here. Just we shall revise this again. About 2000 plants have been described in Ayurveda. And how many are in regular use? 500 are in regular use. And World Conservation Union's list have about 352 medicinal plants. Okay. So we have to study about the importance of some of the medicinal plants. There are many, about 500 plants are in regular use, but 52 are currently, among that 52 are currently threatened and some are in endangered category. Endangered category means if they are not protected, they will be extinct. 52 are threatened. The use of Sarpagandha. Sarpagandha is used for treating blood pressure. It is found only in India. That means Sarpagandha is an endemic plant. Jamun, juice of jamun is very useful for digestive system, for our blood pressure control and many other disease curation. Okay, so especially in the digestive system and diabetes, it is very much useful. Arjun. Arjun leaves are used to cure earache. Earache, है ना? Ear में कोई problem होता है तो अर्जुन leaves का इस्तेमाल करते हैं. It is also used to regulate blood pressure. Babul
As you have seen that Babool has a toothpaste also. On the name of Babool, there is a toothpaste also. The leaves are used to cure eye sores. Its gums is used as tonic. For eye treatment, for teeth treatment, and also it is used as a tonic. Neem is an antibiotic. All of you know that. And tulsi plant is used for controlling cough and cold and fever also. Kachanar is used for treatment of asthma and ulcer, right? The buds and roots are good for digestive problem. So here are some of the examples only. How many plants names are given here? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only 7 are I'm seven. given here. But Seven. besides this, there are many other plants which are very, very useful for the treatment of one or other disease. So after the importance of some of the medicinal plants, we shall go to the next topic, that is wildlife. Wildlife. India has variety of wildlife. More than 89,000 animal species are found in India, right? And there are 1,200 species of birds, and they constitute 13% of world total. There are 2,500 species of fish, which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles, and mammals. You already know the meaning of this. Amphibians means which can live both in, say, Both land and water. Land and land and in water. Reptiles. Which animals are known as reptiles? which live on land How they and they move? creep. crawl. They creep, Land crawl. crawl. Creeping animals, okay, and mammals, which feed their baby, suckle their babies, right? So amphibians, reptiles, and mammals include 5 to 8% of the world's total in India, only from India. Okay, so you can write a data here. Put a heading in your copy. Are you ready with your copy and pen? Yes, ma'am. Yes, So write today's date and start writing. Put the heading. Put a heading, India's rich fauna. India's rich fauna. Underline it. Right, number 1, animal species. Number 1, animal species. And right in front, and right in its front, 8,000 species. Animals कितने हैं बताओ? 8,000 species. 89,000. हम 89,000 89, sorry, 89,000 species. है ना? Right, number 2, birds, 1,200 species. Fish, 2,500 species. No, ma'am. 25,445. 2,546 है सर मैम. हाँ तो ठीक है, लिख लो. थोड़े बुक में कुछ वैरी करता है, नए बुक में पुराने मैम book में अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं. हाँ लिख लो. अब 2,500 भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी. और 2,500 या जितना भी तुम कितना बताए नए दूसरे बुक में बोलो. Ma'am, 2,546. 25,446. हाँ, तो 2,546 जो है फिश स्पीसीज, वो कितना होता है वर्ल्ड का बताओ? 12%. 12%. In bracket you can write 12%. Okay, and amphibians, reptiles, and mammals equals to 4 to 8% of the world. 5 to 8. 5 to 8% of the world. See the book and write. 5 to 8% of the world. Amphibians, reptiles, and mammals.
Right, next topic. अगला टॉपिक लिखो, हैबिटेट्स ऑफ मेन एनिमल्स ऑफ इंडिया. हैबिटेट्स ऑफ मेन एनिमल्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो मेजर एनिमल स्पीसीज है ना, उसके हैबिटेट के बारे में लिखेंगे. तो एक तरफ लिखोगे तुम एनिमल्स का नाम और दूसरे तरफ लिखोगे उसका हैबिटेट. मेन हैबिटेट्स, हैबिटेट्स ऑफ मेजर एनिमल्स या मेन एनिमल्स लिख लिए. अब पहला लिखो, नंबर 1 एलिफेंट्स. एलिफेंट्स के सामने उसके एरियाज या रीजन्स लिखेंगे. लिखो, फॉरेस्ट ऑफ मैम असम. आप एक बार लिखवा दिए मैम. हाँ ठीक है. Yes, ma'am. ये तो ये question हाँ, हो तो चुका है. एक क्लास में लिखे थे ना, 9J में लिखाया गया था, बाकी दो Yes, क्लास हम में लोग नहीं हुआ. नहीं लिखे. 90 में हाँ, तो कुछ तुम लोग 9th H में भी नहीं हुआ है मैम. हाँ, में भी H नहीं वाले हुआ. बच्चे लिखो, कुछ अब हुआ J ही वाले नहीं. बच्चे ना याद करते रहो, है ना. तब ओके तक मैम. J वाले बच्चे याद करो या और इसको रिवाइज करते रहो. तो पहला लिखो एलिफेंट्स और उसके सामने लिखो फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. फिर से फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. एलिफेंट के सामने लिखना है. नंबर 2 लिखो, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस. यहां से स्पेलिंग देखो बुक में से. नंबर 2 में लिखो वन हॉर्न्ड राइनोसेरस. उसके सामने लिखो swampy and marshy lands of swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. दोनों रिपीट करो तो, एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोरस. एक बच्चा रिपीट करो. Ma'am, elephant forest Elephants, of hotwood Assam, forests of Assam, Karnataka, and Karnataka, and Kerala. Kerala. One-horned rhinoceros, swampy and marshy lands of Assam and West of Bengal. Assam and West Bengal. ठीक है. नंबर 3 लिखिए, wild ass and camel. एक साथ लिखो, wild ass and camels. Wild ass and camels. इसके सामने क्या लिखोगे बोलो. Run of Kutch and Thar Desert. हाँ लिखिए, रन ऑफ कच्छ, KACHCHH, रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट. कच्छ का स्पेलिंग ठीक से लिखना, KACHCHH एंड थार डेजर्ट. नंबर 4 लिखो तुम, लायंस. हाँ मेरा नहीं होगा, मेरा क्लास टीचर नहीं. नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखे तुम बोलो. नेक्स्ट नंबर लायन. इंडियन लायन. तो लायन के सामने लिखो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. गिर फॉरेस्ट, GIR, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. नेक्स्ट लिखिए टाइगर्स. फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबंस of West Bengal and Himalayan region. टाइगर्स के सामने लिखो फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन. Have you written? Yes, ma'am. 9J स्टूडेंट्स, तुम लोग इसको याद कर लिए. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. तो इंडिया में ना और भी बहुत सारे एनिमल्स है. इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, है ना. चौसिंगा माने का मतलब हो गया 4 सिंग वाले एंटीलोप, मतलब ये डियर का एक वैरायटी है ना. इंडियन बाइसन ये भी एक ये है, ऑक्स की तरह एनिमल है. नीलगाय है, गैजल भी डियर का एक वैरायटी है.
तो डियर के ना बहुत सारे वैरायटी होते हैं और सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मंकीज के भी बहुत वैरायटी है, लेमर है और भी बहुत सारे, लंगूर है, बहुत सारे वैरायटीज हैं मंकी के भी इंडिया में। तो देयर आर वैरायटीज ऑफ एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। अब एक अलग से क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि डिस्क्राइब अबाउट द हिमालयन एनिमल्स। ये क्वेश्चन तुम लिख लो, डिस्क्राइब अबाउट द हिमालयन एनिमल्स। मैम आप लिखवा दी थी हम लोगों को। हाँ ठीक है, तो बाकी बच्चे ना इस पैराग्राफ को मार्क कर लेंगे लिखने के लिए। ये लास्ट पैराग्राफ है पेज 48 का, कि हिमालयन एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं हिमालयन रीजन में जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन को बेयर कर सके, है ना। द हिमालयन एनिमल्स हैव वेरी थिक फर ऑन देयर बॉडी टू बेयर द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज दे आर लिविंग ऑन very high altitude which are almost freezing during the winters. तो इसमें कौन कौन से एनिमल के नाम है? याक, Y-A-K, याक, shaggy horned wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelope. Antelope is a beautiful variety of deer which is known as Tibetan antelope in Himalayas. The bharal, bharal किसको कहते हैं? ब्लू शीप को, शीप का एक वैरायटी है। वाइल्ड शीप and the kiang, Tibetan wild ass का नाम क्या है? kiang, K-I-A-N-J, जी kiang. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and very rare red panda are found in certain pockets. ठीक है ना, इन सारे का पिक्चर हम लोग उसमें सर्च करके देखते हैं ना, गूगल के इमेज में हम देखते हैं ये सारे एनिमल्स का पिक्चर। कि याक तो तुम लोग देखे ही होंगे, भरल कैसा दिखता है, वाइल्ड शिप कैसा है, कियांग कैसा है देखने में, ये सब हम लोग इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो अच्छा है। उसमें है ना, हमने रखा हुआ है, कभी तुमको दिखाएंगे इसको, गूगल से सर्च करके ये सारे का पिक्चर है एनिमल्स का। रेड पांडा बहुत ब्यूटीफुल एनिमल है, बहुत शाई एनिमल है, जल्दी से बाहर नहीं दिखाई देता है, छुप के रहते हैं सब फॉरेस्ट में, है ना। और ये भी है, रेयर स्पीसीज भी है, मतलब इनके नंबर बहुत कम है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इसमें तुम हिमालयन एनिमल्स के बारे में यहाँ से डिटेल लिख रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो, इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल रीजन्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल आर फाउंड। नेक्स्ट पेज। The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. ठीक है ना, इंडिया में जो घड़ियाल है ना वो बहुत ही ये है, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये सब वैरायटी काफी है इंडिया में। Birds life in India is colorful. Peacocks, pigeons, ducks, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of the country. Forest and wetland. Wetland किसको कहते हैं? वेटलैंड ऐसे लैंड को कहते हैं जहाँ पे हमेशा वाटर लॉगिंग रहता है। बहुत बड़े बड़े रीजन में हमेशा कुछ न कुछ वाटर लॉगिंग रहता है और उसी तरह के प्लांट्स भी वहाँ ग्रो किए रहते हैं। तो वेटलैंड्स जो है ना वो बर्ड्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इंडिया के बड़े बड़े वेटलैंड में साइबेरियन क्रेन भी आते हैं, बहुत तरह के बर्ड्स माइग्रेट करके दूर दूर से आते हैं। सोच लो, इमेजिन करो कि एशिया के एकदम नॉर्थ में है साइबेरिया और वहाँ के बर्ड्स माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं। जब वहाँ एकदम आइस जम जाता है ना, तो उससे वैसे सीवियर विंटर के पहले ही ये बर्ड्स माइग्रेट करके इंडिया की तरफ चले आते हैं। साइबेरियन क्रेन इसको कहते हैं। तो वेटलैंड में आते हैं, जहाँ कहीं भी वेटलैंड है ना, मतलब पानी जहाँ है प्लांट्स के साथ साथ, वीड्स के साथ साथ, तो वहाँ पे बर्ड्स के लिए बड़ा ही वो सुटेबल प्लेस होता है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड भी वो होता है। We have selected our crops from a biodiverse environment, from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature as milk animal. Milk animal means the animals which give milk. They also provided us drought power.
for transportation, है ना? Draught animals, that means those animals which are used for drawing our carts and for carrying the loads. तो मिल्च एनिमल और ड्रॉट एनिमल दो तरह के एनिमल होते हैं. मिल्च एनिमल मतलब जो मिल्क देते हैं, और ड्रॉट एनिमल जो हमारे कार्ट को और या लोड को ढोने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं. मीट और एग्स ये सब भी सोर्स है एनिमल्स के जो हमको मिलता है. द फिश प्रोवाइड nutritive food. Many insects help in pollination of crops and fruit trees and exert biological control on such insects which are harmful. अब देखो फिश भी है ना, तो फिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडिया जैसे कंट्री में. क्यों बोलो? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरी बिग साइज ऑफ पॉपुलेशन. Coastal तो areas, इतने बड़े ma'am. पॉपुलेशन में क्या है कि बहुत लोग पॉवर्टी लाइन के भी नीचे रहते हैं. तो इसमें क्या है कि फिश जो है ना एक सस्ता सोर्स है प्रोटीन का. तो फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट. तो जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है. तो फिश के प्रोडक्शन को बहुत इंडिया में बढ़ाया जा रहा है. क्यों बढ़ाया जा रहा है? कि उसमें फूड के अंदर प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये सप्लीमेंट ऑफ फिश. और इंसेक्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है एनवायरमेंट में. इंसेक्ट पॉलिनेशन का काम करते हैं. फ्रूट्स और क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे अगर इंसेक्ट नहीं रहेंगे तो, ठीक है ना? इसलिए जितने भी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं ना इंडिया में, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ऐसे करके एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खास प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं. प्रोजेक्ट इंसेक्ट भी चलाया गया है ना? और जो हार्मफुल इंसेक्ट है उसको दूसरे इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं इस तरह से दूसरे एनिमल, क्योंकि ये एक फूड चेन भी चलता रहता है साथ साथ में. एवरी स्पीसीज हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. ठीक है ना? हर एक स्पीसीज का एक रोल है. अब एक स्नेक है तो उसका भी रोल है, एक टाइगर है तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरमेंट में, है ना? कोई कहेगा कि टाइगर की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम उसको प्रूफ करो कि क्यों टाइगर जरूरी है. कौन बताएगा? बोलो तो तुम में से कोई एक बच्चा. Why tiger is necessary in our ecosystem? To maintain the food chain. To maintain the Yes, ecological ma'am. balance, For ma'am. maintaining the As the food web chain. chain, as tiger will be not there, then the web chain will be disturbed, and it will affect our ecological system. How web chain will be disturbed? Because if the tigers are not Ma'am, the there, number of the deer will be population of- increased, and they will eat the grasses in the field. Very good. Very That good. will be not good for the environment. Ah. That's why, ma'am. Yes, if the carnivorous animals are not in the ecosystem, then the herbivorous animals population will increase a lot, and the herbivorous animals will destroy or eat up all the plant life. So the whole ecosystem will be disturbed. So each and every animal, each and every insect is playing its important role in the ecosystem in the food web. Hence, e-conservation is essential. ठीक है ना? इसलिए हर एक एनिमल का कंजर्वेशन एसेंशियल है. राइनो को भी बचाना है, फिश को भी बचाना है, हर एक इंसेक्ट और बर्ड्स के स्पीसीज को भी बचाना है. हर्बीवोरस, कार्निवोरस सबका बैलेंस रहना चाहिए. As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of the plants and animals resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का होता है. क्योंकि ह्यूमन बीइंग ना प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ के जो रेशियो है ना उसको ये कर देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं. जैसे एनिमल्स तो फॉरेस्ट को नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, ह्यूमन बीइंग ही फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होगा तो habitat of wildlife will be destroyed, and thus there will be lot of disturbance or disbalance in the ecosystem. So human beings are more dangerous for creating a disbalance in the ecosystem. About 1300, इसको हम लोग पूरा कर लें, थोड़ा सा टाइम और है. About 1300 plant species are endangered. About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. Extinct means already vanished, already has vanished. 20 plant species have already vanished. है ना? और एक बात ये भी है
कि जो बड़े एनिमल और बड़े प्लांट अगर एक्सटिंक्ट होते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहे हैं और वो एक्सटिंक्ट हो गए जिसका पता भी नहीं चला है. Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. ठीक है ना. तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा कि what steps are taken by the government to protect flora and fauna. ये क्वेश्चन लिखो तो. What steps has been taken have been taken by the government to protect flora and fauna. अब देखो इस फॉरेस्ट को या एनिमल को किन किन चीजों से लॉस हो रहा है. एक तो सबसे बड़ा जो बेसिक रीजन है वो ये है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन इंडिया. India's population has increased at a very rapid pace. There is a very big size of population. When population is big, we require more residential area, we require more agricultural land, we do more mining, and we create more pollution. We start more industries, and all these create lot of pollution. तो ये सारे कारण जो है ना जिसके बेस में क्या है, पॉपुलेशन. ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो यही होगा कि हमें ज्यादा फूड चाहिए. फूड के लिए फिर एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, तो हम फॉरेस्ट को एनक्रोच करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड ले लेते हैं. तो ये सब हमारे इकोसिस्टम को लॉस पहुंचाता है. तो अब इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया. तो अभी देखो एक दो पॉइंट लिखा देते हैं जितना टाइम है, और एक दो पॉइंट बच जाएगा तो अगले क्लास में लिख लेंगे. ठीक है, देखो. Wildlife Protection Act was implemented. Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India. Wildlife Protection Act was implemented in 1972 in India. Following are the protective steps. Following are the protective steps. Number 1. Ma'am, following are the Protective steps. Number 1. देखो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे कि इंडिया में कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व, कितने सारे नेशनल पार्क और कितने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टार्ट किए गए हैं. इन सबको मिला के हम एक पॉइंट बना रहे हैं. ठीक है, तो लिखो. The government has established about 18 biosphere reserves. पहले 14 था, अभी कुछ बढ़ गया है. डेटा चेंज होते रहता है. तुम्हारे बुक में कितना है, नए बुक में? I'm 18. हाँ, तो लिखो. The government has established, this is point number 1. The government has established 18 biosphere reserves, comma, यहाँ कुछ डेटा चेंज होगा तो तुम चेंज कर लेना. 89 national parks, 89 national parks, 103 comma, national parks. 103 national parks. 103. 3, ठीक है, लिखो. 103 national parks. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डेटा है बताओ? 535. 535 wildlife. 535. हाँ, तो repeat ये कीजिए. दोनों पॉइंट मिला के हम लोग एक पॉइंट बना लिए कि the government has established 18 biosphere reserves, 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries, and many zoological gardens. Many zoological gardens to take care of natural heritage. To take care of natural heritage. This is point number 1. ठीक है? ma'am to take Ma'am, many Care of- many To take care of natural heritage. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये लिखो तुम. एक और पॉइंट जो हम लोग बना रहे हैं वो लिखो
कि deforestation has been banned. Deforestation has been banned. BANNED. Deforestation has been banned, and afforestation programs are being encouraged. And afforestation programs are being encouraged, like One Mahotsav, etc. और भी कुछ नाम लिख सकते हैं, एक एग्जांपल दे दो, like One Mahotsav, etc. मतलब डिफॉरेस्टेशन को बैन किया गया है और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट हो गए। Yes, ma'am. थर्ड लिखो। कितना मिनट बच रहा है देखो तो। Ma'am, 5 मैम minutes. 5 मिनट। 5 मिनट है। 5 minutes. हाँ तो ठीक है। Write the third point which is given in your book here. The point number 3, financial and technical assistance. Financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. मैम प्रोवाइडेड के बाद Provided to many botanical gardens, BOTANICAL, to many botanical gardens by government since 1992. और एक बात सुनो, in tomorrow's class you will sit with a map sheet of India, political map sheet of India, to mark all the national park and wildlife sanctuary. ठीक है ना? कल के क्लास में एक मैप शीट लेकर के बैठना, ठीक है ना? हम लोग कल ये करेंगे और कुछ रिवीजन भी करेंगे इस लेसन से। यही लेसन तो तुम्हारा लास्ट लेसन है, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी बहुत क्लास मिलेगा। देखो पॉइंट नंबर 4, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करा रहे हैं पॉइंट 4 में, ये लिखो, पीरियोडिक सेंसस, पीरियोडिक PERIODIC, periodic census of animals are undertaken. Periodic census of animals are undertaken to know the trend of their growth, GROWTH, to know the trend of their growth. ठीक है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का सेंसस होता है ना, वैसे वाइल्ड लाइफ का भी सेंसस होता है कि कितने टाइगर हैं, कितने ये हैं, लायन है, कितना राइनो है इंडिया में, सबका काउंटिंग होता है। तो ये पीरियोडिक सेंसस भी बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि ये पर्टिकुलर एनिमल बढ़ रहा है कि घट रहा है, और उस अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट स्टेप लेती है। ठीक है ना? जैसे टाइगर का नंबर एक समय था कि 5500 था बहुत पहले, है ना? और वो घटते घटते एकदम बहुत कम चलाया था, लेस देन 1600। अभी बढ़ के ना ये टाइगर का नंबर फिर बहुत आगे बढ़ा है ना? करीब करीब 3000 पे हम फिर पहुंच गए, टाइगर का नंबर बढ़ा है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट लिख लिए पीरियोडिक सेंसस का। अब 5वां पॉइंट ये लिखो, ये वाला जो तुम्हारे बुक में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 लिखो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो. You will see it from the book and complete this point. Project Great Indian Bustard, Project